Hello friends, this is Team SuperSimplified and we are here with another interesting topic in our current affairs series, and today's topic is who funds WHO. So World Health Organization की funding कहाँ से आती है? That is what we are going to discuss. See, we have selected this particular topic for three reasons. First reason is that from static G के perspective, this topic is very important because international organizations के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, राइट? और दूसरी चीज़ है कि अभी करंटली कोविड-19 का जो पैंडेमिक है जिससे हम फाइट कर रहे हैं, उसमें फाइट करने में WHO का बहुत बड़ा रोल है एट द इंटरनेशनल लेवल, राइट? सो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द कंट्रीज इज गेटिंग इंश्योर्ड बाय WHO. उसके बाद में तीसरा रीजन ये है कि करंटली इसके ऊपर एक कमेंट किया गया था यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा. ही सेड कि ही विल स्टॉप द फंडिंग ऑफ WHO. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज WHO, व्हाट इज इट्स रोल, what is this international organization doing and how is it funded, right? So controversial जो part है उस पर हम कम डिस्कशन करेंगे because that is not important from exam perspective, but for your curiosity sake we will discuss that also briefly. So let us quickly start. So World Health Organization क्या है? So WHO is a specialized agency of the United Nations which is responsible for international public health. So public health के सेक्टर में काम करने वाला United Nations का एक विंग है, एक बॉडी है WHO, and it was established in 1948 on 7th April. ये डेट भी आपको याद रखनी है because World Health or because it is celebrated as World Health Day. विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में इसको हर साल मनाया जाता है, एंड इसलिए मनाया जाता है बिकॉज WHO was established on 7th April 1948. एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनीवा में, विच इज इन स्विट्जरलैंड, ठीक है. एंड इसके अगर गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज हेडेड बाय अ डायरेक्टर जनरल, एंड करेक्ट डायरेक्टर जनरल जो है WHO के, ही इज टेड्रोस एडेनॉम. सो ही इज टेड्रोस एडेनॉम एंड ही इज फ्रॉम इथियोपिया, ठीक है. अफ्रीकन कंट्री है इथियोपिया, एंड इट हैज 6 रीजनल ऑफिसेस and there are 150 field offices worldwide in several countries. And what is the role of WHO? इसका काम क्या होता है? Mainly इसका काम यह है कि it has to provide technical assistance to the countries and it sets international health standards and guidelines. तो ये काम अभी भी ये कर रहा है. कोविड-19 का जो पैंडेमिक चल रहा है उस टाइम पे भी it is providing technical assistance to the countries, it is setting international health standards and guidelines, right? So countries are following these guidelines. Okay, so if there is a feedback from any country ki this treatment is working properly or this is the SOP, standard operating procedure, what we have to follow, or some good best practices are coming from somewhere, so through WHO it gets shared with other countries also, right? So it is a nodal agency, it is kind of a umbrella organization working at the international level, which is ensuring coordination and cooperation among the several member countries in the field of public health, right? So the importance of WHO we are understanding now more and more because of the current pandemic what we are fighting, and it collects data on global health issues through World Health Survey, and it generates some meaningful reports, some comparisons across the countries which are shared with the international community so that they can take some actions on that, right? और WHO की अगर major achievements की हम बात करें तो what are the major achievements? See, these international bodies like WHO, United Nations, these are sometimes criticized also for their role ki are they really playing any important role or they are just some kind of dummy organizations, right? So there's a lot of international pressure on them to perform, and there are a lot of major achievements. If someone is asking about the achievements of WHO, then apart from other things there are some major achievements like there is eradication of smallpox in the world. So smallpox जो है वो वैक्सीनेशन के थ्रू खत्म हो गया पूरी दुनिया से. उसके बाद में there is a near eradication of polio जो है इंडिया से तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, and there is a near eradication in the world. So why near eradication? Why it is not completely eradicated from the world? Because दुनिया में लगभग 200 के आसपास देश हैं. There are around 200 countries in the world, and out of these 200 countries only 3 countries are there which are still facing this problem of polio. सिर्फ 3 जगह पे ये पोलियो की जो प्रॉब्लम है वो खत्म नहीं हो पाई है, and you have to name which are these 3 countries. इनके नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं because सिर्फ 3 countries हैं दुनिया में. So you have to tell us in the comment section कि which are these 3 countries. इसमें से 2 countries तो हमारे neighborhood में ही हैं, ठीक है. And WHO is assisting in its own way in the current fight against COVID-19 through guidance and coordination at the international level. Now let us come to the funding part. So इस organization की funding कैसे होती है? देखिए इंटरनेशनल लेवल पे काम करने के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग की जरूरत भी होती है because स्मॉल पॉक्स जो खत्म हुआ है वो ऐसे ही खत्म नहीं हुआ है, पोलियो जो है ऐसे ही खत्म नहीं हुआ है. ऐसा भी है कि कई सारे जो गरीब देश होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, उनको डायरेक्टली फंडिंग भी देनी पड़ती है. सिर्फ असिस्टेंस और गाइडेंस और ज्ञान देने से काम नहीं चलता है. देयर इज लॉट ऑफ फंडिंग आल्सो व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय WHO टू दीज कंट्रीज टू प्रोक्योर मेडिसिन्स, टू कैरी आउट द वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट?
सो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ फंडिंग. सो इसकी जो फंडिंग होती है वो कहाँ से आती है? सो इसकी जो फंडिंग है उसका मेजर पोर्शन जो है 51% पोर्शन आता है मेंबर स्टेट से. उसके बाद में सेकंड मेजर फंडिंग जो है उसका सोर्स है आपका philanthropic फाउंडेशंस. सो 17% ऑफ द फंडिंग इज कमिंग फ्रॉम देयर. देन थर्ड लार्जेस्ट अगर हम बात करें, देन वी हैव यूनाइटेड नेशंस. देयर आर लॉट ऑफ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेवलपमेंट बैंक्स, राइट, लाइक वी हैव वर्ल्ड बैंक एंड ऑल. सो ऑल दीज एजेंसीज आर फंडिंग अराउंड 15%. उसके बाद में देयर आर लॉट ऑफ पार्टनरशिप्स ऑफ WHO विद various government and non-government bodies, various other organizations, right? So these partnerships are contributing around 7%, and then we have some NGOs working in this particular sector which are contributing around another 7%, and private sector entities से 3% आता है और बाकी का जो 1% है वो आता है academic institutions की तरफ से, right? So these are the major sources of funding for WHO, right? और अगर हम देखें टॉप 20 कंट्रीब्यूटर्स, तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि इंडिविजुअली कौन से ऑर्गेनाइजेशंस या कौन सी कंट्रीज हैं जो मेजर फंडिंग करती हैं WHO का. सो दीज फिगर्स आर ऑफ 2016-17, थोड़े पुराने फिगर्स हैं, बट डजंट मैटर बिकॉज वी आर नॉट गोइंग इनटू द एब्सोल्यूट टर्म्स कि किसने कितने रुपए दिए. वी आर नॉट गोइंग इनटू एग्जैक्ट US million dollars. सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर इज हु इज द मेजर कंट्रीब्यूटर, राइट. सो वी आर गोइंग टू सी द रैंकिंग एंड रिलेटिव पोजिशन ओनली. सो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है दैट इज USA. ओके, यूएसए के बाद में सेकंड कंट्रीब्यूटर आता है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन. सो दिस इज अ philanthropic ऑर्गेनाइजेशन विच इज स्टार्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट को-फाउंडर मिस्टर बिल गेट्स, एंड बिल गेट्स की वाइफ है मेलिंडा गेट्स. सो इन्होंने मिलकर अपनी एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एक philanthropic ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, एंड दे कंट्रीब्यूट अ लॉट टू WHO. सो दे आर द सेकंड मेजर कंट्रीब्यूटर इन द वर्ल्ड. उसके बाद में आता है हमारा यूनाइटेड किंगडम, देन वी हैव गवी अलायंस, जापान, जर्मनी, वर्ल्ड बैंक, European Commission, Rotary International. Then we have Canada, Australia, Norway, China, France. So these are the countries. So these are the major entities which are contributing to the funding of the World Health Organization. और इसमें इंडिया नहीं है क्योंकि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही कम है. $2 मिलियन के आसपास का कंट्रीब्यूशन था इंडिया का 2019 के अंदर, ठीक है. सो इट इज नॉट रैंकिंग इन टॉप 20, इट इज समवेयर डाउन. So since USA is the largest funding entity for WHO, so that is why it is able to threaten WHO. So recently there was a remark by US President Donald Trump where he said that he will put on hold America's funding to WHO because it was accusing it of, being China-centric during the ongoing coronavirus pandemic. So WHO is taking sides with China and it is favoring China, something like that. Some remarks were there by US president, right? So WHO mainly relies on the voluntary contributions of the member states. So this is going to hit hard. That is what US understands. But there is an irony, according to several media reports. As of January 2020, the US has still not paid its dues for 2019 and 2020. So it is not going to impact much on WHO. Anyhow, this is not important from exam perspective from us, but we should know what is going around in the world, right? So how the people are reacting to this particular pandemic, right? So we have to understand all these things. So that's all guys, that's all for today. Please suggest us some topics if you would like us to cover, and we'll see you soon with another lecture. Till then, take care, bye bye, and prepare well.